चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। For now, let's shift focus to the visuals that have also come in this morning of Ashwani Vaishnav taking charge as the Railways Minister. So we'll just put out those visuals as well of Ashwani Vaishnav taking charge as a Railways Minister. In fact, he's even issued a statement after taking charge. He says that people have blessed Prime Minister again to serve the country. Railways will have a very big role in the next. In the last 10 years, Prime Minister has done a lot of reforms in railways, be it the electrification of railways, construction of new tracks, new types of trains, new services, and redevelopment of stations. And that is a vision that's also going to be taken forward. So as we speak, Railways Minister and IT Minister taking charge. Take our viewers to the other big stories. We are tracking the district of Baloda Bazar in Chhattisgarh witnessed a major upheaval as scores of demonstrators assembled, surrounded the collector's office and set vehicles on fire. Oh yes, absolutely. In fact, tensions that escalated as a heated confrontation unfolded between law enforcement and the enraged crowd during the protests. Here's how the story unraveled. Baloda Bazar district in Chhattisgarh witnessed a major upheaval as thousands of protesters gathered and encircled the collector's office. What started as a heated demonstration under the Shera ground unfolded into utter chaos as the protesters marched towards the collector's office. Vehicles were set on fire. Stones were pelted, glasses were shattered. The protest was organized by the Satnami community in response to vandalism at Amar Gufa and the desecration of the Jet Kham, their sacred flag. Members of the Satnami community from across the state converged to demand justice for the vandalism and destruction. Their demand: stringent punishment, including the death penalty for those responsible. Situation escalated. Clashes erupted between protesters and the police. Unable to placate the angry mob, the police had to run to save their lives. Amar Gufa holds immense religious significance for the Satnami community. The vandalism at the Mahakoni temple within the Amar Gufa complex ignited widespread anger among the Satnami followers. Despite the police making arrests, including 3 individuals, the community's anger remains unabated, prompting demands for a CBI investigation. पथराव करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुस गए और यहाँ पे रखी गाड़ियों में उन्होंने आग लगा दिया, आगजनी की घटना किया और उसके बाद तोड़फोड़ जो है कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया है। आग पे काबू कर लिया गया और शहर में भी कुछ उपद्रव किए गए हैं, तो उनके भी कंट्रोल कर लिया गया है और अभी स्थिति नियंत्रण में है। लगभग 500 के आसपास हमने पुलिस बल तैनात किया था और पर्याप्त तैनात किया था, लेकिन क्योंकि पुलिस के ऊपर ही उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पथराव किया, कुछ हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इंजर्ड हुए हैं। Amid the chaos, listen in to what Bilaighar MLA Kavita Pran Nahare had to say. किसी के भी शासकीय संपत्ति या काकरो घर के संपत्ति नुकसान नहीं पहुंचावा। ये हमारे सतनामी समाज के लड़ाई है। वो आप मन एकजुट होकर लड़ा था, वो आप मन न्याय मिल ही और न्याय देना पड़ी। जो कार्य के लिए हमन आए हैं, जो आंदोलन है तेला हमन करबो और कछु तोड़ फोड़ नहीं करा।
Chief Minister Vishnu Devasai has ordered a high-level investigation and stringent measures against the perpetrators. Meanwhile, Home Minister Vijay Sharma announced a judicial inquiry into the Amar Gufa case, aiming to address the community's concerns. इसमें असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की गड़बड़ी की है। सर्वप्रथम तो मैं जिन लोगों की संपत्ति की क्षति हुई है, मैं उनसे आग्रह करता हूं शांति बनाए रखें। सभी जनों से आग्रह करता हूं शांति बनाए रखें। लिखित में न्यायिक जांच की मांग की है। पहले मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रहा था जिसको मना किया गया उनके द्वारा, इसको नहीं करना है, न्यायिक जांच करना है। तो जुडिशियल इंक्वायरी फिर इसमें बहाल किया गया। इसमें कहा गया कि जांच, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा और फिर वहां से जैसा स्पष्ट होता है। बलौदाबाजार तो तुरंत ही जाना ही है। Even as authorities have jumped in, even as Section 144 has been imposed, Baloda Bazar continues to remain a hot plate.